स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? One second. So today in afternoon session, I will be sharing you your marks, your assignment status, and everything. Okay. Is the screen visible to everybody? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, Yes, okay. sir. So today's Yes, content, sir. today we will be discussing on two things, that is the difference between through and throws keyword, and one more difference, major difference between, that is final, finally, and the final method. Okay, ये तीनों के ऊपर आज हमारा discussion रहेगा, and after that we'll be going for small assignments. Okay, because we will be covering one assignments at least in morning session, and in afternoon session we will be completing all the assignments which are related to this user defined exception handling. Today itself we will be winding up with user defined exception handling, and tomorrow onwards we will be entering into threading. Okay, uh, so we'll move further. Any doubts, any questions anybody want to ask as far as the test and all those things? That if you have any doubts, we will be having a discussion in afternoon session. Okay, now the basic difference I want to highlight between the through and throws keyword. This question is basically asked whenever you are going as a fresher for the interviews. Okay, so throws and throws keyword, ये दोनों का difference समझना बहुत ज़रूरी है. Now the throw and throws is a concept of exception handling. दोनों concept exception handling के ही है, where you will find the throw keyword throw the exception explicitly, throw three keyword throws exception explicitly from the method or a block, whereas throws throws keyword is used to signature the method, मतलब क्या है, ये उस मेथड के डिस्क्रिप्शन में आ जाता है. दिस इज जस्ट अ सिग्नेचर, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन को वो हैंडल कर सकता है, वो एक्सेप्शन का नाम क्या है. So throws is nothing but a signature, but throw keyword is a part of exception handling, and it is just for the purpose of exception handling explicitly. Again, Akshay, you send me your mail. You have not yet sent me? Akshay, are you there? मला तू ओके मेल सर. मला मेल पाठव ना बाबा. सेंड करतो. कधी पाठवणार तू? पुढच्या वर्षी तुम्हाला काम नाही सांगित पाठवतो. कधी तुला 10 वेळेस सांगितलं मी आतापर्यंत, किती प्रत्येक लेक्चरला सांगतोय तू मेल पाठव. सर आधी पाठवला होता याच्या आधी. मग म्हटलं मेल असेल तुमच्याकडे. परत पाठव बाबा, तुम्हाला असं नको करत जाऊ. नाउ चालतंय सर. these are the basic two differences, that is throw and throws keyword. ये दोनों में ध्यान में रखना है. Throw keyword is just for the throwing exception explicitly, where throws keyword is a signature of the method. ये दोनों का सबसे बड़ा difference है. Now as far as the definition is concerned, definition की जब हम बात करेंगे, definition will be helping us to identify two things. Okay, so there are many differences, उसमें से कुछ difference तो पहला definition के ऊपर हम बात करेंगे. The definition says that throw keyword का, the Java throw keyword is used to throw an exception explicitly, in the code inside the function or block of code, तो ये आपको थ्रो करने के लिए, एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है. बट थ्रोस कीवर्ड is a keyword which is used in the method signature, to declare an exception which might be thrown, मैं बोलता हूँ which might be, it's not compulsory, it might be thrown while the exception in the code. So ये सिग्नेचर है और ये एक्सप्लिसिटली जनरेट कर रहा है एक्सेप्शन को. दोनों में बहुत डिफरेंस है. यानी ये मेथड बता रहा है कि इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन हो सकती है जिसको हम हैंडल करने वाले हैं. और थ्रो क्या कर रहा है कि एक्सेप्शन हो या ना हो, सिचुएशन आने के बाद इट विल बी जनरेटिंग एक्सप्लिसिटली, मतलब एक्सप्लिसिटली इट विल बी जनरेटिंग एन एरर दैट विल बी थ्रोन. Second difference is that the type of exception. Using throw keyword we can only propagate unchecked exception, यानी throw keyword से हम सिर्फ unchecked exception को propagate कर सकते. That is, the checked exception cannot be propagated. Checked exception cannot be propagated, but unchecked exception are propagated. मतलब unchecked exception को हम जनरेट करेंगे, बट चेक्ड एक्सेप्शन को हम जनरेट नहीं कर सकते. व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन? आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ऑल एक्सेप्शंस विच आर चेक्ड,
which are generated by Java itself, are all called as a checked exception. Unchecked exception मतलब divide by zero, array index out of bound, जो exception आपके कोडिंग प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, और उसी को ही हैंडल करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज किया जाता है. ओके, सो using, now this is example, I want to say that this is related to the